Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। फोकस में है लेटेंट व्यू। नतीजे आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले Q4 में कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए। रेवेन्यू में करीब 48% तक का इजाफा देखने को मिला। 117 करोड़ का आसपास का आंकड़ा। EBITDA लेवल पर 35 करोड़ का आंकड़ा रहा है और मुनाफे में 49% तक की वृद्धि देखने को मिली है। रेवेन्यू सेक्टोरली टेक्नोलॉजी में अच्छी बढ़त, रिटेल में अच्छी बढ़त देखी गई है। अब यहाँ से आगे का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी के CFO राजन वेंकटेशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, गुड मॉर्निंग। ये रेवेन्यू में मैं देख रही हूँ एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है आपका, एंड इवन योर प्रॉफिटेबिलिटी सीम्स टू हैव इंक्रीज्ड, बट मार्जिन्स थोड़े से प्रेशर में है। व्हाई हैव द मार्जिन्स ट्रिम्ड दिस पर्टिकुलर क्वार्टर? First of all, thank you for having us on the show. आपका जो revenue वाला सवाल है वो मैं पहले आंसर करूंगा. Yes, we see a very strong demand environment at this point in time. For the sort of work that we do, we believe the market is at a very interesting space, which is why we even went public last year, right? Because we believe that the opportunity for data and analytics is immense. काफी बड़ा मार्केट जो है is out there for us to go and exploit and take share out of. So the revenue growth is testimony to and a validation of our view of how the market is, and also it also validates some of the very strong relationships that we've built over time. From a sectoral standpoint, technology continues to be a very strong sector for us. जो काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं हमारे आज के डेट पे, आप हमारे टॉप 5 क्लाइंट्स देखेंगे, ऑल द टॉप 5 क्लाइंट्स टुडे आर फ्रॉम द टेक्नोलॉजी वर्टिकल, एंड दीज आर रिलेशनशिप्स दैट वी बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? ईच ऑफ दीज क्लाइंट्स we've had relationships for well in excess of 5 years. So we are beginning to see the gains by going deeper into these very large Fortune 500 clients. We are able to mine them quite effectively, and that's what reflects in the revenue growth. But also from a new logo addition standpoint, last year आप देखेंगे FY 22 was a very good year for us in terms of adding new logos. We added 18 new logos. So the demand environment, of course, continues to be very robust. Okay. From a margin standpoint, हमने ये पहले भी बताया है कि जो FY 21 के margins थे, which was close to about 34%, that was an exceptional year. FY 21 was an exceptional year because जो हमारे marketing spends थे या फिर जो हमारे travel spends थे, वो सारे because of COVID, we were not able to execute. Either we were not able to travel or we were not able to conduct marketing events. So that is one aspect. The other thing is, from this year onwards, what we've also consciously done is we are making a lot of investments in the front end sales teams. तो हमने काफी सारे नए sales, we've added a lot of sales folks in the United States. We will also make similar investments in Europe now. And some of those investments, of course, from a margin standpoint, there is a small impact on margins because of the investments that we are making. But what we are increasingly seeing is it is setting us up right. The growth numbers that you see are because of the investments that we are making at this point. मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आप इन्वेस्टमेंट फेज में हैं, आप कह रहे हैं कि डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन इस समय जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखने को मिल रहे हैं और ग्लोबली है, क्या उससे क्या डिमांड पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई सकता है, दे सकता है, स्पेशली ऑन द रिटेल साइड? क्या वहां पर कुछ स्लो डाउन या फिर एग्जीक्यूशन में देरी आ सकती है? डिसीजन मेकिंग कस्टमर्स का डिले हो सकता है क्या? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है. देयर इज ऑफ कोर्स अ वेरी लार्ज लूमिंग कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन, एंड to be honest to you, at this point in time, we don't see, at least for the client set that we have, and also the new conversations that we are having, we don't see any significant impact or pressure of inflation at this point in time. In fact, you'll be pleased to know that for a lot of our clients, we were able to get better prices also in the last year. Our clients also understand that for them to source talent in their local markets is quite difficult, and they rely on partners like us to help them with talent. Of course, from an overall demand standpoint, from a decision-making standpoint, yes, we continue to watch the macro indicators quite closely. We do believe that, for instance, Target came out with, I believe, their results fairly recently, and they indicated some bit of sluggishness in the retail outlook for the economy. So we do continue to watch these trends.
But at this point in time, we believe we are very strongly poised. We have a significant runway ahead of us. We are quite excited to be where we are right now. टू ग्रो द बिजनेस, क्या ये ऑर्गेनिक होगा या फिर आप इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज को भी रेडार पर रखेंगे, और क्या आपने कुछ ऐसा आइडेंटिफाई किया है जिसको गोइंग फॉरवर्ड यू कैन परहैप्स acquire? So हम ये जो है ये continuous process है of evaluating opportunities to acquire companies. Having said that, we will do an acquisition or we will execute an execution only when it is one in alignment with our overall strategy, and it also fits some of the strategic filters that we put out for ourselves for acquisitions. Two, it also has to make sense for us financially. It has to be accretive or EPS accretive for us in the long run. That is something that we are very, very conscious of. And three, it also has to be culturally, in alignment with the culture of Latent View. So yes, we are very, very serious about acquiring a company, but we will only do it when we are able to see significant synergies as well as significant growth opportunities by acquiring a company. राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स. तो मैनेजमेंट फिलहाल कॉन्फिडेंट है ग्रोथ को लेकर, और खासतौर से जो ओवरऑल रेवेन्यू आया है इसमें आगे अपटिक्स देखने को मिलेंगे. लेकिन हाँ, कुछ सेक्टर्स है जहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, रिटेल में मिसाल के तौर पर. लेकिन अभी तक कोई साइंस नहीं है कि इनके बिजनेस पर और इनकी वर्किंग पर कुछ इम्पैक्ट आएगा. स्टॉक आज थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड कर रहा है. चलिए खिलाड़ी नंबर 1 पर लौटते हैं.